Yeah. So, hello everyone. Hope everyone is doing absolutely fine. And myself, Varad Kularni, and we have Gaurav Wadhwani as my friend. We have organized a great session interview today with Mr. Mukul Chadha, who has been doing his articleship in Ernst& Young Taxation Department, which is in itself very rare. So, let's talk about how his journey has been and how is he feeling, how's everything going with him. Hello, Mukul. Hi, Varad. How are you? Absolutely doing good and hope you are doing well too. Yes. So the motive of this interview is simply to show the people who are about to join their articleship or who are thinking to join in Big Fours or big firms in as a whole in the Department of Taxation. Prior to this, we have done videos on Big Four statutory audit and a firm which does specializes in mergers and acquisitions. So do watch those videos also for your understanding of those different fields also. So let's get started. मुकुल, अब आप पे आते हैं, Yeah, है ना? sure. आप शुरू करते यस प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए अपने ऑडियंस से. Sure. So जैसे वरद ने बताया, my name is मुकुल और मैं अभी आर्टिकलशिप यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ इन द डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट. तो और मैंने अभी ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह कॉलेज से करी थी. तो या अभी तो ग्रेजुएशन को मेरे को 4-5 मंथ्स हो गए एंड उसके बाद ही मैंने ईवाई ज्वाइन किया था अप्रोक्सीमेटली 4-5 मंथ्स पहले. तो अभी तक ग्रेट. सही काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. Okay, that's great. Great to hear that, ग्रेट. Mukul. So, Mukul, जैसे कि before starting, जैसे हम जो भी देखते हैं the vacancies that are there in the LinkedIn or whole branding or the knowledge of vacancies that we get, in most of those posts or most of those vacancies, we see one thing common. Either it's of statutory audit or it's of internal audit, risk advisory basically. So, in Big Fours, there are so many vacancies in those fields. But how did you get to know about that there is a vacancy in direct tax and what made you to pursue in this field? ओके सो एक्चुअली मेरा पहले से इंटरेस्ट ऑडिट में था, स्टार्ट ऑडिट में. Okay. बट ओके. एक मेरे बट एक मेरे कॉलोनी में एक भैया थे, तो दे स्टार्टेड वर्किंग इन ईवाई एंड तो मेरी उनसे काफी बात होती थी. तो दे सेड कि वैकेंसी है इन द डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट. तो आई सेड मेरे को अप्लाई करना. तो उन्होंने उनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे. आई रियरली सॉ एनी वैकेंसी. जैसे गौरव ने कहा कि बहुत कम वैकेंसी दिखी थी डायरेक्ट टैक्स में इन बिग फोर स्पेशली. तो उनके थ्रू मेरे को पता चला था. तो अब पहले मेरे को लगता था स्टार्ट ऑडिट भी ज्यादा अच्छा है, बट अब जब जब से डायरेक्ट टैक्स में आऊँ तो वही ज्यादा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो यार मुकुल वही है ना, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो सारे बच्चे हैं वो स्टैट ऑडिट के वैकेंसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है. जैसे तुमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स भी अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है, नॉलेज उसमें भी बहुत ज्यादा है. और एज एन आर्टिकल इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर इन द इनिशियल फेजेस to interact with big clients, big people in the organization itself, then it's a very good thing in itself. So my next question to you, Mukul, is that as an article, as as a first year article, what kind of jobs are assigned to you and what's your typical working day looks like? So actually, in the first year, clients are not allotted to you. So you work Okay. with a consultant, which is a CA, and under him or her, you work with him. So उसमें क्या होता है कि हमें जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, हम उनसे डील करते हैं, बट हम दोनों मिलके काम करते हैं, सीए एंड आर्ट. सो टिपिकली एक जो एंड गोल हमारा होता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न या फिर एक लिटिगेशन. दो मेन काम होते हैं अगर ब्रॉडवे कैटेगरी करें. तो लिटिगेशंस में तो कभी भी नोटिस आ सकता है. काफी सारे सेक्शंस है. तो जब भी नोटिस आता है और उसके जो भी रिप्लाई होता है वो सब फाइल करने होते हैं, और उसका फॉलो अप Okay. जैसे फर्दर नोटिस आते हैं. तो जैसे 142(1) का पहले 143(2) का आया था अभी रिसेंटली काफी क्लाइंट्स पे, क्योंकि उसकी ड्यू डेट 30 जन थी. तो इसीलिए Okay. अब उसके बाद अब फॉलो अप नोटिस आते हैं 142(1) में, तो उसके रिप्लाईज फाइल करने होते हैं. एक तो ये काम होता है. एंड सेकंड एंड गोल होता है एक हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न होती है. बेसिकली इंडिविजुअल्स का तो हमारे पास अभी नहीं है, जो मेरे
सीनियर के पास क्लाइंट्स है, मोस्टली Great. कॉर्पोरेट्स ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेन गोल तो हमारा रिटर्न फाइल करना होता है, बट जो उसके पहले के प्रोसेस होते हैं दैट आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट लेटर जो जाता है उसमें भी वी हैव टू, जैसे ईवा एक ग्लोबल फर्म है, तो वी हैव टू Yes. टेक अप्रूवल्स फ्रॉम एवरी ऑडिट पार्टनर and some independence approval as per Hmm. the Companies Act. So EVA has a page designed for it that for this client, this approvals are required. For example, for Okay. ABC client, independence approval is required, Indian audit partner approval is required, and for example, if it is a French audit partner or French audit client, then French audit partner approval is also required in that case. For example, France Okay. audit. Okay. Great. So Eva, so this is the first step when we give the engagement letter. That is done by an artist. Okay. And the next Okay. step is the एक फॉर्म है, पेस फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिस्क एवेल्युएट करते हैं कि इस क्लाइंट में फीस अमाउंट कितना है, ज्यादा हम इसको रिस्क, मतलब इसमें हम क्या कौन से पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा टेक्निकल एडवाइस है, तो उसके हिसाब से एक रिस्क कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से हम अप्रूवल जाते हैं। तो ये होता है पहला Great. पार्ट। Okay. और इसके बाद हमारा जो उसके क्लाइंट से डीलिंग तो होती रहती है, अगर जैसे फीस इंक्रीज करना है या फिर जो भी स्कोप बताना है क्लाइंट को, थोड़ा कुछ जो हमारा एंगेजमेंट लेटर है उसमें कुछ गलत लग रहा है तो हमें लीगल टीम से एडवाइस लेनी पड़ती है कि इसमें ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब बीच का जो प्रोसेस होता है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट में देखें तो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड होता है अगर आप ऑडिट क्लाइंट है तो टैक्स के लिए। Yes. तो इसीलिए Correct. जो भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उसी के हिसाब से हम अप्रूवल्स लेना, ये हमारा काम होता है। एंड फॉर एग्जांपल टिल द बिलिंग पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल हमने रिटर्न भी फाइल कर दी, उसके बाद इनवॉइस रेज होना है, वो भी एक आर्टिकल को करना होता है। एंड जैसे जो जापानीज क्लाइंट्स जो होते हैं उसमें एक विदहोल्डिंग टैक्स कटता है 10% का, तो एक Right. सर्टिफिकेट देते हैं वो, तो वो भी हमें उनसे लेना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारे सिस्टम में वो फाइनेंस से भी मेल्स आती रहती है कि आपका 10% इस बिल में आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी लेके हमें उनको देना होता है कि इट इज डन, कि ये वाला 10% उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स काटा हुआ है तो हम उसका क्रेडिट लेने के बाद। तो ऐसा होता है फ्रॉम द Great. एंगेजमेंट लेटर टू द बिलिंग पार्ट, all parts are done by article and reviewed by the CA consultant and then by the manager. And Okay. if further something is required, then director and partner also take approvals also take place. Okay. Okay. That's great to hear. So, Mukul, in short, can I My say, yeah. yeah, in short, can I say that as an first year article, it's more of an administrative work, like right Yeah, from you engagement can say that. to raising a bill, you are saying, right? So the Yeah, yeah. core work that is there, you are saying the end goal is return filing. So even in returns, there are multiple provisions. So you have to apply those Yeah. transactions that have already occurred. So you have to see, you have to apply your judgment that what all will be covered in the income, in which head, in which head it will be covered. So majorly that part is done by your senior or your the manager. No. That is done by me also. It is reviewed by the senior. Okay, okay. So And that if I also have a working is doubt or done by something you like that, only. Okay, yeah. So the that's Okay. main work of the senior is to review the work or any doubt which I arise, which जो मेरे को उसमें आता है डाउट में, जैसे कुछ अप्रूवल्स में कैसे लेना है या कुछ भी मेरे को डाउट आता है तो आई आस्क माय सीनियर। तो ये उनका काम होता है और मेरा काम होता है करना, रिव्यू करना सीनियर का काम, और अगर सीनियर को कुछ डाउट है तो मैनेजर रिव्यू करता है। एंड जो क्लाइंट से डीलिंग होती है वो भी मेल्स जो होती है वो मैं बनाता हूँ और फिर सीनियर रिव्यू करती है एंड देन मैनेजर सेंड। okay. ऐसा होता So है। Okay. okay, Okay. that's great. Okay, so this was what you did as an first year article. Now my question is ki, imagine yourself, you are in third year article, you have just passed or you are about to give your CA finals. Based on what you have seen till now and based on what you have seen your senior articles as, so what do you think as a third year article, what all things you will gain after going through this articleship phase? Because in taxation there are majorly three parts, that is compliance, advisory and apna litigation. So do you think you'll be able to cover all the three aspects, and how comprehensively you'll be able to cover? Like, do you think as a Okay, third year so article? in Yeah, EY, go ahead. Yeah.
Yeah, complete your question. Yeah, go ahead. That was the only question that I wanted to ask. That after completing your 3 year, what all things will gain? Okay. So basically, there are two departments in the direct tax department itself. Two subfield basically. The Okay. one is the Okay. compliance and litigation, and one is the advisory part. Hmm. So I am in the compliance and litigation part. So in the third year article is assigned client of it himself only. So क्लाइंट जब उसके होते हैं तो पूरा प्रोसेस भी लेके जो आर्टिकल करता है उसके ऊपर कोई सीनियर नहीं होता, डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करता है वो. Okay. तो जो रिव्यू वाला पार्ट है बाय कंसल्टेंसी है वो हट जाता है, डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द मैनेजर हो जाता है. ये फर्क होता है, और क्योंकि आप 2 साल में आप सीख चुके होते सब कुछ प्रोसेस वगैरह, सो आपको फिर दिक्कत ज्यादा आती नहीं है, डायरेक्टली मैनेजर से ही रिव्यू कराना. That's great. क्योंकि अगर आप सीए एग्जाम्स दे भी दोगे, उसके बाद अगर आप बन भी गए तो अगर आप ज्वाइन दोबारा करते हो तो आप एज अ सीए करोगे तो आपका काम वही हो जाएगा. आपके नीचे एक आर्टिकल आ जाएगा, वो रिव्यू करेगा, आप वो बनाएगा और आपका काम रिव्यू वाला हो Okay. जाएगा. ये चेंज हो जाएगा. That's great. Great. Next question, Mukul. I will ask you that as you said that you will do the work and your senior will review the work. तो उसमें ऐसा है, मेरे को क्वेश्चन ऐसा है कि जनरली टैक्स में टीम साइज कितनी होती है? सो इन माय टीम एक पार्टनर है, उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली 5-6 टीम्स है, 5-6 मैनेजर्स अप्रोक्सीमेटली, and उसके अंदर around 10 consultants, 10-12 consultants and 15-20 articles, and analysts भी होते हैं जो after graduation join करते हैं, वो भी 5-6 होंगे. तो approximately एक पार्टनर के अंदर 50 people होंगे जो वर्क कर रहे होंगे, सब मैनेजर डायरेक्टर सबको मिला. ओके, सो एट अ टाइम एक क्लाइंट पे शायद एक आर्टिकल, एक कंसल्टेंट, एक मैनेजर. हाँ, एक क्लाइंट पे अगर बोलो तो मैं एक पूरी एज अ टीम बोल रहा था, अगर एक क्लाइंट पे बोलो तो एक आर्टिकल, एक कंसल्टेंट जो सीए है, एंड एक मैनेजर, एंड डायरेक्टर समटाइम्स प्लेज अ पार्ट. बाकी ये तीन ही होते हैं. अगर कुछ ज्यादा टेक्निकल एडवाइस होती है तो डायरेक्टर ऑल्सो आ जाते हैं. बाकी ये तीन ही होते हैं मोस्टली. Okay, great. So Mukul, now having said that, it seems fantastic that you have done a great work, and it's actually a good thing that you are enjoying your work also, and that's fantastic. Next question, which is very common, and which is important that we make it a part of our session today, is that is how's the work pressure and your typical working hours? Yeah. So as you have also done the articleship in EY, in audit department, you would also know that in audit, my friend also works in EY in audit department. तो उनके working hours तो approximately 10 के around शुरू होते हैं and 11-12 तक जाते हैं रात को on a regular basis. Yes. But tax में होता है approximately we start at 10 and 8:30 के around हमारा हो जाता है. अभी क्योंकि हमारा वो सीजन नहीं आया, मतलब टैक्स के रिटर्न्स का भी, जैसे 30 सितंबर लास्ट डेट है कुछ फर्म्स वगैरह की, एंड फिर दिसंबर में भी है, नवंबर में भी है, तो उस प्रेशर में अभी तो मैं गया नहीं, तो मैं कह नहीं सकता उसमें. बट अभी जब तक रिटर्न सीजन नहीं आया अभी तक तो 8 तक फ्री हो जाता है. बाकी ऑब्वियसली जब ड्यू डेट्स होंगी तो तब हमारा भी 10, 11, 12 तो होगा. Yes, that's implied. And I would also request my viewers to consider these points, and these are some important points, because after a point when you will enter into these big organizations, this is what going to be there. So consider this beforehand, I will suggest. This I'll add to what Varad said, because we have just given our exams and we are just so much excited to join any organization that we say, oh, work pressure, I'll handle it. Studies, I'll handle it. So we just don't consider these points as a valid thing. But 4 to 5 months into the articleship, we realize that it is equally important to have a work-life balance as well. So yes, work is definitely important, but you need to start giving time to yourself and your studies as well. So these points in that way becomes more important to be considered. Yeah, because ultimately the goal is to become CA, right? Yeah, true. So studies be important.
तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको कैसे स्टडी करोगे, आप पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास। ग्रेट ग्रेट। तो वही है यार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत, मतलब एक्साइटमेंट तो होती है मगर कुछ महीनों में जाके सब एक्साइटमेंट तो चली जाती है। बट देन I will tell you, it's somewhere it gives you advantage also. Now, as you said, you handle only corporate clients. So going forward, it is definitely going to help you. What are your views on this? या डेफिनेटली जो जो भी छोटी फर्म्स होते हैं या फिर बाकी बिग फोर को छोड़ के, ये उनके पास भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं डेफिनेटली, बट मोस्टली में मिक्स होते हैं। Okay, इंडिविजुअल क्लाइंट्स, हमारे पास एलएलपीज भी हैं, बट उसको मैं मोस्टली कॉर्पोरेट है, बट एलएलपीज भी काफी। सो मेरा ये व्यू है कि इन द फ्यूचर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है great. कंपैरेटिव Yes, टू इंडिविजुअल क्लाइंट्स, एंड एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली उससे ज्यादा बेटर होता है। तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स रीडिंग बेटर लगती है मुझे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन फ्यूचर। great, great. Thanks, Mukul. Thanks for reply. So, Mukul, my next question is that, yeah, my next question is, as an article, if I choose DT as an option, so we heard many people say that if you are choosing taxation as an option in your articleship, it will restrict your future scope. While if you choose audit, there are many avenues that will open up for you. So today I want to bust this myth. If it's myth, I'll I would want to ask your opinion, because after becoming CA, how will it be advantageous to me if I pursue DT right from my articleship? तो मैं बोल रहा था कि जैसे जिसको भी जो फील्ड में आर्टिकलशिप मिल रही है, स्पेशली इन Hmm. बिग फोर्स या Hmm. टॉप फर्म्स, कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। लोग लोग प्रेफर करते हैं कि दे चूज फील्ड ओवर द क्लाइंट, ओवर द सॉरी कंपनी। Organization. तो Yeah. लोग सोचते हैं कि मुझे Hmm. आईडी या स्टार्ट वर्ड में ही जाना है, चाहे मेरे को बिग फोर मिले, चाहे कोई भी स्मॉल फर्म मिले, कोई भी हो, Hmm. चाहे मीडियोकर फर्म, कोई भी मिले। बट आई वुड से कि एक्सपीरियंस आपको, एक तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा इन टॉप फर्म्स और मीडियोकर फर्म्स, कि आपको क्लाइंट हैंडलिंग समझ आ जाएगी। कि आप जो भी आप मेल्स करते हैं मैनेजर्स वगैरह, आपको Hmm. ऑब्वियसली सीसी में रखते हैं वो तो, और आप भी उनको ड्राफ्ट बना के भेजते हो, तो आपकी रिटर्न स्किल्स तो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। कैसे क्लाइंट से डील करना है, कैसे उनको जो भी अ, जैसे आप कभी कभी डिले भी हो जाता है तो उनका कभी आता है रिमाइंडर वगैरह, तो उससे उससे कैसे डील करना है, तो ये भी काफी चीजें पता चलती है उससे। ये तो हो Correct. गया जनरल बात। बट स्पेसिफिक टू डीटी, मैं कहूंगा कि डीटी में होगा कि आप या तो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न तो है ही, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न या इंडिविजुअल रिटर्न या एलएलपी रिटर्न, रिटर्न पार्ट तो है ही। उसके बाद आप लिटिगेशंस में भी जा सकते हो। लिटिगेशंस में भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम में लिटिगेशंस थोड़ी कम है, बट उसी सब टीम में जो दूसरी सेम पार्टनर के अंदर दूसरी सब टीम है, मेरा एक फ्रेंड है उसमें, तो उसमें लिटिगेशन ज्यादा है। सो इट Okay. डिपेंड्स कि आप क्या काम कर रहे हो। और जैसे लिटिगेशन एंड बेसिकली रिटर्न्स पार्ट तो है ही, और बाकी जो मैंने इन जनरल बोला कि यू कैन एडवाइस क्लाइंट्स आल्सो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटर्न स्किल्स काफी बेटर। Yes. That's Correct. great. That's fantastic. True. बाकी ये तो आपको है एक ही कि और, like, yeah, go ahead. हाँ, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो लास्ट का काम होता है जैसे रिटर्न फाइलिंग, दैट्स द एंड गोल, बट उसके पहले के जो प्रोसेसेस है वो भी आपको समझ में आ जाती है कि फ्रॉम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट लेटर, कि आपको क्या क्या एंगेजमेंट लेटर में Hmm. डालना है। उसमें भी अगर कुछ डाल दिया और उसमें अगर कुछ आपको क्लाइंट को लगा या आपको लगा कि वो लीगली रॉन्ग है, तो आपको लीगल टीम से एडवाइस लेनी पड़ती है। तो बेसिकली माइन्यूट चीजें हैं, बट इसमें भी काफी सीखने को मिलता है। Great. Great, Mukul. So, what is your final this? If it's Big Four, then it works. Otherwise, it's not. I would like to know whether you support this statement or not, because this is trending nowadays, as it is articleship season. Are you saying that if I get before I'll work, and if not I'll not, right? Yes, yes, Yeah, yeah. So it's definitely a myth, because it is too, I think big fours are too high. Definitely there's a brand image, definitely the clients are big, definitely the processes are aligned, and the जो भी हम ERP में पढ़ते हैं
इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सब इंटीग्रेटेड होता है, फाइनेंस से लेके बिलिंग से लेके एंगेजमेंट लेटर से लेके लीगल टीम, सब इंटीग्रेटेड होता है डेफिनेटली। बट मीडियोकर फर्म में भी होगा, थोड़ा इससे कम होगा डेफिनेटली, क्लाइंट का साइज थोड़ा कम होगा, बट वहां पे आपको एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको डायरेक्टली सीनियर से काफी अच्छे से इंटरेक्ट करने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा कम होता है बिग फोर पे, आपको सीधा सीए जो आपका कंसल्टेंट है ऊपर सीनियर, उससे मोस्टली आपकी बात होती है, मैनेजर से कभी कभी होती है, बट उसके ऊपर लेवल के बहुत ही रेयरली बात होती है। तो ये चीज मिसिंग है, बट डेफिनेटली सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो बिग फोर के ये प्रोज कॉन्स है, मीडियोकर फर्म के ये प्रोज एंड कॉन्स है, तो डेफिनेटली अगर जहां भी मिल रही है आपको ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब लोग बोलेंगे कि देखो तो बिग फोर मिल गई तो भूल रहा है, सबको ले लेनी चाहिए, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जो भी नॉर्मल मीडियोकर फर्म में भी होता है, एक रिसेंटली एक कंसल्टेंट आए थे मेरी टीम में, ही वाज फ्रॉम हरिभक्ति, वो भी एक टॉप फर्म है, बट बिग फोर जितनी नहीं है, बट उनको जितना आता था लिटिगेशन, लिटरली हमारी टीम में ज्यादातर लोगों को नहीं आता, क्योंकि वहां पे जितना इंटरेक्शन होता है वो यहाँ नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको कंसीडर करना चाहिए कि कोई भी आपको बिग फोर मिल रही है, ऑब्वियसली प्रोज, उसके भी प्रोज है, उसके भी कॉन्स है, जैसे मैंने बोला, और मीडियोकर के भी प्रोज एंड कॉन्स है। तो सिर्फ बिग फोर के पीछे भागना इज नॉट की वर्थ इट, की सिर्फ बिग फोर जाएंगे वरना कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। That's great. Great. That's great. Great. So in conclusion, And that's, yeah. yeah, So what a in fantastic conclusion, myth buster. true, very true. Because yeah, there are so many pros and cons in everything that we, in every experience or in every places. So at the same time, like as Mukul said, there are many things that's not too great or too hyped about Big Fours, but there are few things that you get to learn: professionalism, that you get to learn all those email drafting skills, writing skills, the way you conduct yourself. But at the same time, as Mukul also highlighted, that there was this member from Hari Bhakti. So not exactly I'm talking about the organization, but from I'm saying that he's from another organization. Still, he's very much great at litigation part. So it's not at all that at one place you'll get to you'll know everything about the work that you'll do there, but there are many good things in every place. So it's better to, wherever you are, you just pick the good points from there and just keep on learning. So that will help much in long term, instead of crying about what you are not getting. So with this we can Definitely. conclude. And Yeah, one more thing I would like to add, Gaurav, that I said that big fours have some pros and cons, and obviously mediocre and small firms have some pros true, and cons. So true. we can do that. Sometime we work for a big four, and sometime we work for a mediocre or a small firm to get the best of the board. That's a Agree, wonderful agree. advice, and I think Varad will more than happy to accept this school of thought, because Varad has Agreed. Totally already agree. has experience of Big Four for 6 months in statutory audit department, and now he's exploring other options of the other fields that are there in CA. So that's a wonderful session with Mukul. I hope our audience would have got great insights about DT as an option in a Big Four. So thank you so much, Mukul, for your participation and helping our viewers out to solve this dilemma. And I hope we'll hear you in the near future as well. Thank you so much for joining us. Thank Thanks you, a lot, Gaurav and Mukul, Varad, for for your the time. thank you, Gaurav and Varad, for the wonderful experience. Thank you.